अपने अपने आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। कौन बताएगा इसका आंसर? जिस हाँ, चैट बॉक्स आप लोग नहीं लिखे, मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर रखी है। अच्छा चैट। सिंपली दे कैन गिव द आंसर। आता है आप लोगों को? सो गुड। नहीं आता है आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट बाद में, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन टफ लेके आया हूँ। आज ये क्वेश्चन ओके। इजी, मैक्सिमम कितने टफ हो सकते हैं वो है। हाँ हाँ। द आंसर इज एन एस्ट्रॉयड। एन एस्ट्रॉइड। विच ऑर्गन इनसाइड योर हेड helps you think, remember, think and feel emotions? Hypothalamus, I think. I think The brain. pain. सर आवाज नहीं आ रही सर है मेरी? आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही, क्लियर क्लियर। What do we call animal that can live comfortably both water and on land, like frog and toads? The answer is amphibians. Okay, good. Now the next question. How many straight sides does a six-side shape have, like a bee's honeycomb cell? So उस शेप का नाम बताएं जिसके सिक्स साइड्स हो। फॉर एग्जाम्पल थ्री साइड्स है तो ट्राइंगल, फोर साइड है तो रेक्टेंगल या स्क्वायर, Rectangle, फाइव साइड्स square, है तो पेंटागन, तो सिक्स साइड है pentagon, तो क्या होगा? दैट इज हेक्सागन। hexagon. ठीक है, दैट इज हेक्सागन। नेक्स्ट, विच Next इज द one. स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? Which is the smallest continent in the world? Australia. ओके, सो स्मॉलेस्ट इज द ऑस्ट्रेलिया, एंड द लार्जेस्ट इज, द Asia. लार्जेस्ट, यस, the largest one is Asia, the smallest one is Australia, and Australia is Australia. the also the continent and country both. Country. Okay? What is the freezing point of pure water? 0 डिग्री सेल्सियस। That is 0 degree 0 डिग्री Celsius. सेल्सियस। अभी किसी बच्चों को बॉइलिंग पॉइंट, बच्चों को पता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है? बच्चे बताएं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का क्या होता है? That is 100 डिग्री। 100 degree. 100 डिग्री सेल्सियस। Yes. 0 degree पे पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और 100 डिग्री पे बॉयल होके वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, what makes up about 70% of the human adult body? वाटर। Yes, water. Just take a second, just take a second. विच बर्ड लेज द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड? जिस आंसर्स बच्चे अपने चैट बॉक्स में बताएंगे किसका इसका आंसर क्या होगा। अरे वाह, काफी सारे आंसर आने शुरू हो गए। आंसर्स ऑस्ट्रिच। वेरी गुड। वेरी गुड। What do you call a massive group of stars, gas, and dust held together by gravity like our Milky Way? अब ऑस्ट्रिच आंसर। अब इसको अब हो गया आंसर पिछले वाले का बच्चों। अब इसका आंसर देना शुरू करिए। ऑस्ट्रिच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल अ मैसिव ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट Good. हेल्ड A टुगेदर अ galaxy. गैलेक्सी? वेरी गुड। और अपनी गैलेक्सी का नाम पता है आप सबको? जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम? Very good. मिल्की वे। अर्थ पे हम रहते हैं। अर्थ इज नॉट द गैलेक्सी, अर्थ इज अ प्लैनेट। ठीक है, गैलेक्सी का नाम है
मिल्की वे, क्वेश्चन में ही देखो मिल्की वे। आंसर दिया हुआ है ना, मिल्की वे, गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। Which land animal is the tallest in the world? Very good, you know. That is giraffe. Good. And which land animal is the largest in the world? Very good, Vedant. That is elephant. Good. Now, what part of a tree takes in water and minerals directly from the soil? Yes, they are good. Root. That is root. Good. What do we call an animal that is active during the night and sleeps during the daytime, like an owl? Good, Sivan Jaiswal. That is a nocturnal animal. A bat टाइप है लेकिन उनको कहा जाता है नॉक्टर्नल एनिमल्स. ठीक है. Which is the largest internal organ inside the human body? आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? द लिवर है. नहीं यार, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. यस, लिवर ही. सॉरी, नॉट इंटेस्टाइन dude. That is liver. Now, what color do you get if you mix blue and green paint together? ब्लू एंड ग्रीन को आप मिक्स करोगे तो कौन सा पेंट बनेगा, यानी कौन सा कलर बनेगा? मरीन। क्या? येलो। टील कलर. येलो. येलो नहीं बनेगा. येलो, येलो एंड रेड मिलाते हैं तो ऑरेंज बनता है. ठीक है. पर्पल, पर्पल ब्लू एंड आई थिंक रेड को मिला के बस बनता है. ठीक है. टर्क्वाइश कलर। नेक्स्ट, what do we call the remains or prints of ancient plants and animals reserved inside rocks for millions of years? Good. बताइए बच्चों। Siddhant. फॉसिल, अरे आंसर आ गया। हाँ, फॉसिल्स, yes, हाँ। that is fossils. वेरी Good. गुड। नहीं, पढ़ाई हो रही है बच्चों की, तैयारी हाँ. चल रही है। Which planet in our solar system is known as the red planet? ये आसान है, ये सबको पता होना चाहिए. Good, वेदांत तिवारी. हाँ, very good. Yes, ये आप सबको पता. That is, yes, the Mars. मार्स। Mars is the red, also known as the red planet. What do you call a heavy storm with very strong winds and heavy rain that spins warms ocean waters? बता. सब हैवी। Tornado, cyclone, typhoon. हरिकेन। Now, the next, how many हाउ millimeters are there मेनी। in one single centimeter? एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? Good, Vedant. That is 10. 10 millimeters. In 1 centimeter, there is only 10 millimeter. Good. Next, which insect is Which famous for insect making a famous for making clicking sound at night and leaping high across garden grass? nuts? The answer is cricket. Yes. जिसे ग्रास हॉपर भी कहा जाता है. ठीक है.
जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सो गुड, नहीं आ रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए टेक द स्क्रीनशॉट, ताकि वो आप बाद में याद कर सको। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू What यू do कॉल you अ call? शेप? यस मैम, कंटिन्यू। What do you call a shape that has eight straight sides like a standard stop sign on the road? Octagon. गुड। Hmm. A football saucer. What happens if a defender fouls an attacking player inside the big box in front of the goal? अब जितने लोग फुटबॉल खेलते हैं उनको पता हो। Hmm. अभी आंसर। अब पेनल्टी किक। पेनल्टी किक, गोलकीपर नॉट किक, नहीं। इट्स पेनल्टी। पेनाल्टी किक, गोलकीपर नहीं। What is the long cylinder stick with a flat blade at the bottom used to hit a small ball on grass or turf? ये तो बहुत आसानी है, बता पाएंगे बच्चे। बता दिया इन्होंने। हॉकी स्टिक। फील्ड हॉकी स्टिक। फील्ड हॉकी स्टिक। दे आर स्मार्ट, some students are very smart. Which racket sport is played on a large court where players hit a yellow felt ball over a net using strong strings? Lawn tennis, very good. Badminton, tennis, good. No, बैडमिंटन इज नॉट, बैडमिंटन में येलो बॉल नहीं होती है, उसमें बैडमिंटन में हाँ दैट इज शटल शटल कॉक। कॉक। शटल कॉक। ओके। What do you call the special shoes with a single row of metal blades underneath used to glide gracefully across smooth ice? Ice skate. Cock. Ice skate. In cricket, what do you call the two players who are currently on the field trying to score run for their team? क्रिकेट देखने वाले सारे बच्चे बताएंगे। बैट्समैन, वेरी गुड। What color jersey is traditionally awarded to the overall leader of the famous Tour de France bicycle race? Yellow. येलो आंसर आ रहा था, येलो जर्सी, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है पहले सबसे। Which indoor target games involves rolling a heavy ball to know down standing pins, aiming for a total score of 300 points? Bowling, very good. 10 pin bowling. What do you call the special platform with a spring that gymnastics use to launch themselves high into the air over a ball box? वेरी गुड शिवांश जायसवाल, इसका आंसर मुझे नहीं पता। In a badminton, what is the light net covered object that players hit back and forth instead of a ball? A shuttlecock। ठीक है, नेक्स्ट, which ancient Japanese sports involved two heavy wrestlers trying to push each other out of a circular ring? Yes, good. The sumo wrestling. Good.
किसी को करनी है? Anyone want to do? Next. In a baseball, how many bases must a runner touch in order to score a single run or a home run? Yes, good. Hmm. That is four. Yes. Four bases को टच करना होता है. ठीक है? Good. First, second, third, and home plate. Next. True or false? Playing fair and respecting the decision of the referee is called good sportsmanship. True or false? Very good. Yes, that is true. Good. Now, what do you call the main central zone of our running track where field events like high jump and long jump takes place? The answer is the infield. ठीक है, जो रनिंग ट्रैक के बीच में होती है, यहाँ पर लॉन्ग जंप वगैरह इवेंट्स होते हैं, उन्हें उसे द इनफील्ड कहा जाता है. नेक्स्ट. Which aquatic sports involves a team of players swimming and throwing a ball into a floating net goal? ऐसा भी कोई गेम होता है क्या? वाह, वाटर पोलो. वेरी गुड, वाटर पोलो. गुड शिवांश. मुझे गेम के बारे में नहीं पता है. गुड. नेक्स्ट. What do you call a sports match that ends with both teams having the exact same score? Good. A draw or a tie. ठीक है, क्रिकेट नहीं कहेंगे. Who is the current governor of Reserve Bank of India who signs our currency notes? Governor of Reserve Bank of India, who is right now? Saktikant Das. Now next. What is the national vegetable of India? अब ये बताओ तुम लोग. चलो. Very good, you know. Good. That is pumpkin. मीठा कद्दू, जिससे वो पेठा वगैरह बनता है ना. यस. मुझे आज भी पता चला नेशनल वेजिटेबल भी है, and that is pumpkin. Now, which state in India is known as the fruit bowl of India because of its delicious apples and peaches? Very good. That is Himachal Pradesh. Very good, you know. Himachal Pradesh is known as the fruit bowl of India. Okay. Now, what do we call the system of pathways, lines, and trains that run completely underground or and elevated tracks in major cities? Wow, ये भी पंखे पे. Very good. The metro rail system, you know, good. Next. Which historical monument in the Mumbai was built to welcome King George V and looks out directly over the Arabian Sea? The answer is
The gateway of India. गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में जो बनाया गया था वो क्यों बना था? टू वेलकम किंग जॉर्ज. ओके. नेक्स्ट. What is the name of the highest mountain peak located entirely inside India? Mount Everest. Mount Everest is not in India. It's in Nepal. Yes, Kanchenjunga or K2. Say K2 भी कहा जाता है. Next. On which date do we celebrate National Sports Day in India to honor the legendary hockey player Major Dhyan Chand? नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? अगस्त 29th अगस्त. ठीक है. नेक्स्ट. व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू फिक्स leakages in water and in water pipes, taps and bathroom fittings? That is, yes, good. Plumber. That is plumber. Now, which official building houses old historical artifacts, armor and royal clothing for citizens to learn about the past? That is museum. That is museum. Museum में हमें historical artifacts, armor, royal clothing वगैरह देखने को यूज मिलता है जो पास्ट में यूज होती है. This is for the second class. Second class है ये, not third. Third is at 6 o'clock. Next. What is the name of the special machine that at the bank or market where you can insert a card to withdraw the cash? Yes, ATM. Good. अब ATM के फुल फॉर्म बताओ चलो इसी बात पे. Automatic teller machine. Good. Automated teller machine. Good. Next. What do you call the practice of collecting and storing rainwater from rooftops to use during dry season? Rainwater harvesting. Okay. Now, the next question. Which important days is celebrated across India on September 14th to promote and honor our official language? 14th September को क्या celebrate किया जाता है? Very good. That is Hindi दिवस. ठीक है. Now, the next, what do you call a person who cooks delicious meal professionally in a restaurant or hotel kitchen? Yes, that is chef. Good. Next, what is the name of the long massive wall built across a flowing river to collect water in a reservoir and generate electricity? A dam.
Next, which natural element do solar panels capture from the sky to generate clean electricity for our homes? That is sunlight. Next, so this is over. 50 questions. Today's